from the layered mafic intrusions. So basically there are igneous layering. Okay, igneous layering is there. So how igneous layering is generated, that we will study, and we will see some examples of large mafic or layer mafic intrusions. So generally the one second mafic intrusions. Generally the layer intrusions, they are huge amount of mafic and ultramafic lavas intruded into the crust. Okay, so these you know the extent of this intrusions you can imagine from the Bushveld complex extent. Okay, Bushveld complex is the largest igneous complex in the world, so it is up to 60,000 kilometer square area. Okay, comprised of 60,000 kilometer square area. Now what is 60,000 kilometer square area? And up to 9 kilometer thick. This is up to 9 kilometer thick. Phosphate complex is the 9 kilometer thick. So this is the largest igneous intrusion in the world, and many type of minerals are there. It is the largest deposit of chromite in the world after Sukinda. Okay, so before Sukinda, sorry. So it is the largest chromite deposit. So basically, these igneous intrusions, what happens? A huge amount of magma comes and settle down in the crust. Okay. After that, these magmas consolidate, or the magmas crystallize from outward, because the heat will be released from the outward only. Right? Okay. So outward, or sometimes what happens, it also cools down from the inward portion also. ओके, सो इनवर्ड पोर्शन से भी ये कूल डाउन होके फिर जाता है बाहर तक. ओके, ऐसे भी होता है समटाइम्स ड्यू टू द कन्वेक्शन करेंट्स गोइंग ऑन. ओके, करंट्स की वजह से वो क्या होता है, इनवर्ड से भी ठंडा होता जाता है. ठीक है. ओके, तो यहाँ इन दिस इग्नियस इंट्रूजन्स लेयरिंग डेवलप्स. In these igneous intrusions, layering develops. So this is the list of major intrusions in the world. Okay, you can go through this list. It is not much important, but these names you should remember. Okay, these names, this age. Okay, what is the age of these names? If these intrusions. So these intrusions type, this may be of dike type or batholith type. Okay, or batholith type. So they be batholith. So measure the Bushveld, the fake, okay, Stillwater, Skarsgård, these are all batholiths, batholiths. Okay, and see the extent. Bushveld is almost 6,000 kilometers square. Huge intrusions in the world. Okay, very huge intrusions in the world. So why these intrusions are important? The main thing is these are very, and almost there is a very less amount of outward intrusion. So what happens, we are, this is a very good source to understand the crystallizing behavior. Actually, yes, if you look at the, if it's, very badly. So uh, yeah, that's why the PPT is taking time for loading. So igneous layering, basically there are three types of layering. Okay, basically there are three types of layering. Three types of layering. Three types of layering. Okay. So first is, this is basic three types. Okay. Apart from there, the other types are there. This is basic three types. First is modal layering. Okay. Modal layering.
second is phase layering, and the third is cryptic layering. Cryptic layering. Okay, these are three types of layering that develops in the igneous intrusions. Okay, so in case of modal layering, you have already written down the modal thing. Okay, modal thing. So who can say what will be the modal layering? So modal layering is the modal percentage of minerals. Okay, mineral constituents, to be precise, mineral constituents like the oxides, or you can say the quartz percentage, or like your plagioclase percentage. Okay, this is the modal layering. Modal percentage of mineral will be will vary in this thing, in modal layering case. Okay, in this thing, what will happen when the magma solidifies? So what will happen in one layer, there is the modal percentage. In another layer, what will happen, the modal percentage will change. Okay, that is igneous layering. That is, this is not equivalent to the sedimentary layering, because in case of sedimentary layering, there is strata deposited, and according to the law of original horizontality. So जो ओरिजिनल हॉरिजॉन्टलिटी की वजह से वो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा सब एक एक फेज का डिपॉजिट होते रहते हैं. that that shows the layering. But in case of igneous, it is relative to the modal percentage of type 1. It is modal layering. Okay, due to modal percentage of mineral constituent. The second is phase layering. Second is phase layering. So basically, this phase layering indicates like a phases. You know already metamorphic phases in your earlier earlier BSc or M.Sc time. So phase layering is equivalent to the phases layering. What phases layering, or you can say like your zone, Barovian zone. This indicates a certain appearance or disappearance of a particular. Okay, appearance or disappearance of a particular phase. Okay, particular phase. So you can say that phase layering is a broader term of modal layering, because phase layering will change if modal layering will change. If percentage of mineral will change, then the phase will change. Na? So modal layering is the smaller version of phase layering. Phase layering is a larger version of modal layering. Okay, so you can say that a phase layer can contain many modal layers. Okay, many modal layers. Many modal layers. Okay, so this is the thing. Phase layering and modal layering. After that, a thing is cryptic layering. Cryptic layering. Cryptic layering. So this cryptic layering is not seen in naked eye. Okay, not seen in naked eye. So you can see the modal layering and the phase layering in naked eye, because you can see the grains. Na, you can see the grains or modal percentage. When modal percentage changes, you can see the color variation at least. Okay, but in case of cryptic layering, not seen in naked eye. But these cryptic layerings are very huge. It is the totally larger version of the phase layering or modal layering, anything you can say. The cryptic layerings are very huge. Okay, this cryptic layering cannot be seen in the naked eye. So about the cryptic layering, this um, modal cryptic layering occurs in a broader scale than both modal and phase layering. Okay, it is not obvious to the naked eye, and this is based on the systematic variation in the chemical composition. Okay, so basically, cryptic layering is the variation in the chemical compositions of the rocks or of the intrusion. Okay, so these three types of layering is there: modal layering, phase layering, cryptic layering. Okay, so modal layering is modal percentage, phase layering is particular appearance and disappearance phase, and cryptic layering is the variation in chemical composition. Okay, three things are there. Apart from that, on the basis of rhythmic, okay, you can classify as
rhythmic. I'll show you this diagram. Rhythmic or intermittent. Okay, rhythmic means you will get, you know already, you will get a cyclic variation. That means if you'll get like pyroxene, then olivine, then again pyroxene, then again olivine. This is rhythmic layering. And intermittent layering is less irregular pattern, like pyroxene, olivine. This is, I am just showing an example. This not happens like this. Okay, there is a group of minerals occurring in one layer. So pyroxene, olivine, then you saw pyroxene came there, but the olivine not came in amphibole came. Okay, again pyroxene, olivine. Okay, this is the intermittent layering. So you can say rhythmic layering, intermittent layering. Rhythmic is a cyclic layering, repetition of layering, but intermittent is irregular in nature. Okay, apart from that, macro rhythmic and micro rhythmic. Okay, macro rhythmic means you can see in your naked eye, and micro rhythmic is you cannot see in the naked eye. Okay, these are very simple terms. And there is also another term. Okay, uniform in the uniform units of layering, they are mineralogically and texturally homogeneous. Okay, mineralogically and texturally homogeneous. क्या होता है उसमें, अगर if this mineralogically and texturally they are homogeneous, you can only see the layers. Okay, but you cannot you like you cannot vary, you cannot distinguish between the layers. Like it is like the sedimentary layers. Okay, sedimentary layers of sandstone. So those are uniform layering. Okay, those are uniform layering because there is not nothing changes in the layers, but you can see the layers. Okay, this also develops in igneous intrusion due to compaction activity or lithological pressure. Okay, lithostratigraphic pressure. And another is non-uniform layering, which is we have seen that modal layering, phase layering, and cryptic layering, in which the mineralogy and texture changes. Okay, another one thing is graded layering. Graded layering is like coarse grain to fine grain. Okay, coarse grain to fine grain, like you know in sedimentary graded bedding is there. In case of igneous it is called as graded layering. So here you can see this is the graded layering. Okay, this is the graded layering. And this is the modal layering, modal percentage of, that's why the color from darker to whiter. Okay, so darker to lighter it changes, again darker to lighter, again darker to lighter. Okay, modal percentage changes. This is the phase layering. This is phase layering. So you can see like here very less amount of plugs are there, but in case of here I am considering the white portions as plagioclase. Okay, considering. So the white portion of minerals you can see here very less amount, but the white portions are very much high in this second layer. Okay, and in this third layer you can see the white grains are larger in size. Okay, so this is phase layering, and this is said to be a cryptic layering. Cryptic layering, but we cannot identify anything in the naked eye. Okay, we have to see in the microscope. So this is cryptic layering. An example is there. Nothing you cannot distinguish here anything. Okay, so you can see here modal layering and phase layering and graded layering, cryptic layering. Okay, so here you can also see all these are uniform layerings. Okay, these are rhythmic layerings. Okay, rhythmic layerings. These are rhythmic. These are also rhythmic. And about this, we have to see another sequence. Then you can only tell it is rhythmic or intermittent. Okay. So after this sequence, if we will see the same sequence repeating, then we will tell that this is as a rhythmic layering. Okay, these are all about the layering. Anyone having any doubts about layering? How this igneous banding develops. So there are some reasons like your gravity settling. Gravity settling, you know what is gravity settling? The dense minerals first crystallize and they settle down to the bottom. Okay, that is gravity settling. Likewise, the layering can develop recharge and magma mixing. That means a magma is constantly crystallizing, but a newer magma comes and recharges the
previous magma. Almost some amount of magma has been crystallized, but some new magma has been intruded into the same chamber. Okay, so like that also a layering can develop. This magma is crystallized sometime, some from outward. Okay, now new magma entered, so this will develop another layering. Okay, after that, oscillation across the core-tectic. Oscillation across the core-tectic means if you are considering a eutectic diagram. Okay, this is the core-tectic point. Okay, this is the core-tectic point. If consider there is a circulating hydrothermal system. Okay, circulating hydrothermal system or CO2 pressure variation, then what will happen? This core-tectic will always shift ना. जैसे कि क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा यूटेक्टिक में क्या होता है, अगर if the hydrous pressure increases then the eutectic shifts. If the normal pressure dry pressure increases then the eutectic goes upward. Okay, but not directly upward ना, ऐसे जाता है. यहाँ पर अगर था डायोक्साइड 58 एनोक्साइड 42, it do not goes directly upward, either this way or this way. Okay, this is the thing. So the cotectic shifts because of the oscillations, because of the available oscillations. H2O हो गया, circulating. Basically, this circulating hydrothermal system is a very effective thing for these layerings, for these oscillations. Okay, that's why the oscillatory zoning is also generated. Na, in case of solid solution, oscillatory zoning is generated. Apart from that, compaction. Okay, I have already told you compaction. In situ crystallization and convection. If there is a convection current working inside the chamber, then also layering can develop. Okay, preferential nucleation and crystallization. That means a particular layer में ही nucleation हो रहा है. This layer is only subject to nucleation. Okay, other layers are not involved in nucleation process. After this layer completes, then another layer develops where nucleation sites are developed. Okay, so nuclear sites are very preferential to particular uh, areas. Okay, likewise the layers can develop. Apart from that, density currents. Okay, density currents. That means density currents. I'm telling you. So if there is a magma, so what happens after the intrusion, after the emplacement, the magma tells the density, they are already stratified, already they क्या होता है emplace हो जाते हैं density के हिसाब से, but they are arranged according to density to circulate through a current na, like when I have just given this example earlier, when you are honey into the ye water. Okay, water. So or you have pouring oil, we have what you have done, you have mixed just oil and water, you have just mixed oil and water, and what you have done, you have just put it constantly. Okay, for long time, what will happen, you will see the oil will after when you have put it stable in the oil will, what will happen, कम अपवर्ड. ओके, जो ऑयल है वो धीरे पर आएगा. क्यों? ये तुम तो उसको मिक्स कर दिया था, बट ऑयल धीरे धीरे ऊपर आया कि नहीं. Why? Because of this density currents. Okay, they are lightly dense, so they will flow upward. This is a current, na? They are flowing is a current, so this is the density. Okay, so according to this, according to their density, what happens? They are always the layerings develop, or any of the combining processes, any of these process combined. Okay, complex processes. These are the basic reasons for igneous layering development. Okay, everyone understood? So now the examples, I'll just read it out, read the PPTs. Okay, so if there is anything you understand, then I'll do that. Okay,
So basically, Bushveld igneous complex is 2.06 billion year old and the largest igneous complex in the world. Okay, it is present in South Africa. Okay, South Africa, and the majority of Bushveld complex, that is like your, you can say, uh, eroded and deformed. Okay, deformed. But now the unit which is exposed and remained flat is known as Rostenburg layer suite. Okay, this is the major part of complex. Boswell complex is a very huge area, but majority is on the beneath the in beneath the surface. Okay, and the most exposed part and the flat one, that is called as Rostenburg layer suite. Okay, it is about 300 to 400 kilometer wide and 9 kilometer thick. This is 9 kilometer thick. Even Roosevelt complex forms near the Moho. Okay, you can see this diagram. This one, okay, this one. It crossed also is it crossed the Moho basic discontinuity. What is the difference between seismic Moho and petrological Moho? The Roosevelt complex. Uh, the greater part of the Rottenberg suite is well layered, with layers usually dipping 10 to 15% towards the center of the intrusion. Okay, so we are starting. There are zones. There are main zones in the complex. So we'll just introduce some lithological or mineralogical character to the zone, because these things, the the layered mafic complex comes only 5 marks. Okay, so there is no 10-mark question in here. So you can just write it down that this zone consists of these minerals only. Okay. The lowest unit, the marginal zone, it is called as the marginal zone, 150-meter thick, and it contains of high aluminum tholeitic basalt. Okay, high aluminum tholeitic basalt. You just what we do. So basically, lower zone is 1050-meter thick. It contains 9 cyclic units of dunite, harborite, pyroxenite. Okay, these are dunite, harborite, pyroxenite. दिस इज ए साइकिल. ओके, दिस इज साइकिल. ड्यूनाइट आएगा, फिर हार्सबुर्गाइट आएगा, फिर पायरोक्सिनाइट आएगा, अगेन ड्यूनाइट, हार्सबुर्गाइट, पायरोक्सिनाइट. टोटल 9 cycles. Okay, total 9 cycles are there of this composition, of this rock composition: dunite, harzburite, pyroxenite. Lower zone, so you have to just write lower zone, dunite, harzburite, pyroxenite, 9 cycles. ठीक है, इतना लिखना. Okay, this is only important, nothing else. Okay, देन योर क्रिटिकल जोन. सो क्रिटिकल जोन में दो डिवीजन होता है, एक लोअर क्रिटिकल जोन, एक अपर क्रिटिकल जोन. सो लोअर क्रिटिकल जोन इज पायरोक्सिनाइट क्यूमुलेट्स विथ ओलिविन बियरिंग लेयर. ओके, ठीक है, एंड विथ 7 क्रोमेटिक लेयर्स. 7 क्रोमेटिक लेयर्स. ओके, 7 क्रोमाइट लेयर्स हैं. अपर क्रिटिकल जोन में जो है वो वहाँ क्यूमुलस प्लाजियोक्लेज का अपीयरेंस होता है. सो बेसिकली तो लोअर क्रिटिकल जोन is pyroxene plus olivine plus chromite, you can write, and the upper critical zone is plagioclase rich. Plage rich, okay, or you can say cumulus plagioclase rich. Cumulus plagioclase rich. Okay. Then your Marine reef. This Marine reef is famous for chromite mining. Okay, chromite mining. Largest chromite mines are here. Chromite deposits are here in the Marian Sky Reef. In the world, the largest chromite deposits are in the Marian Sky Reef. And the buster cyclic units. Okay, यहाँ पर क्या होता है? Thin rhythmic units है किसका? Anorthosite, pyroxenite, norite and chromite. ठीक है, इनका क्या है? Rhythmic units है. कहाँ पे? The buster cyclic. These are called as buster cyclic units. Okay, in the Marian Sky Reef, it is available in the Marian Sky Reef. Okay. The famous PTPD, platinum palladium deposit and sulfide bearing marine sky reef subunit is an orthopyroxenite, olivine and chromite cumulate layer. तो मेरेन स्काई रीफ में टोटल ये आता है, ठीक है, ऑर्थोपाइरोजेनाइट, ओलिविन, क्रोमाइट, क्यूमुलेट लेयर
उसके अंदर जो बास्टर साइक्लिक यूनिट है वहां पर आता है एनाथोसाइट, पायरोक्सिनाइट, नोराइट एंड क्रोमाइट। ओके, तो ऐसे ही चीज है, पढ़ने वाला ही। देन योर मेन जोन कम्स। ओके, तो मेन जोन contains monotonous sequence of norite and gabbro, monotonous sequence। ठीक है, cumulus, olivine and chromite are absent, magnetite occurs only near the top of the zone, so layering is poorly developed in the main zone। So upper zone is the appearance of cumulus magnetite, इतना ही लिखना है कि upper zone is the appearance of cumulus magnetite। ठीक है, the zone is well layered including layers of anorthosite, gabbro and ferrodiorite। Okay, then your stellar complex, basically here। No, morb is not YB na, morb is morb, Medosonic ridge is Medosonic ridge basalt na। So this abyssal hill province is Hawaii, exactly, that is Hawaii। Okay, so Hawaii Islands, Iceland, exactly, so Iceland is another example। No, not Iceland, Iceland is MORB, sorry, Iceland is MORB। Okay, the only place where MORB is exposed is Iceland। ठीक है, तो हवाई इज द अबिसल हिल प्रोविंस जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हिल्स हैं जो हवाई हॉटस्पॉट के वजह से बने हुए हैं। ओके, दैट इज द अबिसल हिल प्रोविंस। तो दीज आर ओआईबीज। ओके, ओशियन में अगर तुम लोगों का सिंपल चीज यही है कि ओशियन में अगर हॉटस्पॉट निकलता है दैट इज ओआईबी। ओके, सिंपल चीज वही है। तो हॉटस्पॉट कैसे निकलता है, हॉटस्पॉट का ओरिजिन, मैंटल प्लूम का ओरिजिन, दिस थिंग यू विल बी टॉट इन जियोडायनामिक्स। ओके, जियोडायनामिक्स में वो चीज तुमको बोल दिया जाएगा या फिर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, साथ पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ाएंगे, बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ an ocean island basalt is generated। ओके, तो डी डबल डैश लेयर से आते हैं ये सब। ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग ओ आई बी का क्लासिफिकेशन करेंगे तो दीज आर टू टाइप्स, ओ आई टी, ओ आई ए। ठीक है, ओ आई टी, ओ आई ए, ओशियन आइलैंड थोलेट्स, ओशियन आइलैंड थोलेट्स एंड ओशियन आइलैंड alkali basalt, alkali basalts। Okay, these are two types, OIB and OIT and OIA। ठीक है, then these are two types, OIA is two types, silica saturated, as there are alkali components silica will be there, so silica saturated and silica undersaturated, silica undersaturated। Okay, you already know what is alkali basalt, what is tholate basalt, I have told you that day। Okay, so this is classification of OIB। ओके, ओ आई बी, ओ आई टी, ओ आई ए होता है, और उसके बाद तुम्हारा ओ आई ए जो होता है वो दो टाइप का होता है, दैट इज योर सिलिका सैचुरेटेड एंड सिलिका अंडर सैचुरेटेड। और इफ वी आर गोइंग टू द petrography of OIB, so OIBs are similar to morb। Okay, OIBs are similar to morb, or you can say similar composition to E morb। Okay, similar composition, not the enrichment, similar composition। Okay, so similar composition, but क्या difference होता है, for same Al2O3, same, if we will consider same Al2O3, then OIBs are higher in K2O, TiO2, P2O5। Okay, P2O5, ये होता है तुम्हारा OIB एंड MORB में बेसिक डिफरेंस।
ठीक है। सो apart from that, plagioclase and cpx are only in ground mass. Plage and cpx, sorry, plage and cpx are in ground mass. Okay, no hydrosmorphic silicates, no hydrosmorphic silicates present. Okay, this is the basic petrography of OIP. ठीक है। And alkali basalts are higher in alkali content. This is a simple thing. Okay, olivine is more prevalent in OIA, occurring in both ground mass and phenocryst. I am just reading this from my note because I misplaced the PPT. Okay, कहाँ पर रह गया, मिल नहीं रहा मुझे. So alkali basalts, olivine compositional range is titanium. Okay, titanium rich augite is present. Okay, titanium rich augite is present. This is the simple petrography of OIB. Okay. इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद तुमको आरी पैटर्न लिखना है. तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आरी पैटर्न. तो सिंपल तुम लोग लिख लेना, यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर देना कि भाई ये जो OIBs आर हाईली enriched than all type of basalts. Okay, then you just draw the diagram. This is N-morph, this is E-morph, this is CFB, and this is OIB. Okay, so you can write down that OIBs are highly enriched in LILE, HFSC. Okay, and बाकी जो भी तुम्हारा रहे क्या, थोरियम, यूरानियम, पोटासियम, ये सब. ओके, तो वो सब लिख लेना तुम लोग. मैं सॉरी, आई विल डू दिस इन पीपीटी. ओके, मुझे पीपीटी को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मिसप्लेस कर दिया मैंने, मिल जाएगा. ठीक है. ओके, सो यू कैन राइट डाउन द पेट्रोजेनेसिस ऑफ OIB. पेट्रोजेनेसिस ऑफ OIB क्या होगा, बोलो. सो व्हेन magma इज originated, लाइक हाउ इट इज originated, तो ये है mantle. ठीक है, ये है mantle है. तो mantle में क्या होगा, mantle is in solid condition. It is in solid condition, capable of flowing. Okay, solid capable of flowing. बट यहाँ पर क्या होता है, जब प्रेशर टेम्परेचर वेरिएशन होता है तब क्या होता है, यहाँ पर मेल्टिंग स्टार्ट होता है. So that is called as mantle melting. Okay, so you have studied the models of mantle melting, batch melting, relief fractionation, dynamic melting. These are models how a mantle melts. Okay, वो मॉडल्स हैं. तो अभी mantle मेल्ट कर रहा है, कंसिडर. और mantle जो मेल्ट होता है वो पार्शियल मेल्ट होता है. व्हाट इज पार्शियल मेल्टिंग? पार्शियल मेल्टिंग मीन्स सिंपली चीज है पार्शियली मेल्ट्स. ओके, पार्शियली मेल्ट्स मतलब टोटल मेल्ट नहीं होगा, कुछ मेल्ट होगा. ठीक है, बिकॉज देयर इज ए वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर एंड द टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन इज नॉट मच मोर. ठीक है, जो भी मतलब कॉम्पोजिशंस हैं वो उसका डायनामिक मेल्टिंग के टाइम में तुम्हारा है ना, एक चीज कि इतना परसेंट मेल्ट होने के बाद इनकम्पैटिबल एलिमेंट सब निकल जाएंगे, वो सब चीज देख लेना. उसमें थोड़ा मैं अंदर में नहीं जा रहा हूँ. तो चीज है कि mantle मेल्ट तो मेल्ट कर गया. तो अभी कंसीडर कि पार्शियल मेल्ट होगा. पार्शियल मेल्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि इतना पार्ट होगा. ठीक है, यहाँ थोड़ा मेल्ट होगा, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, यहाँ थोड़ा, ऐसे मेल्ट होता है. ठीक है, तो मैं उसको एक जगह ले आ रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर ले आ रहा हूँ. तो दिस पार्ट मेल्टेड. अभी दिस पार्ट अगर मेल्ट हो गया तो वेरी कंसीडर इट इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन मेल्टेड. ओके, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन. ठीक है, तो now this thing is these incompatible elements. What are incompatible elements? Incompatible elements are not compatible in solid phase, so they are in solid earlier. Why? Because ये फॉर्म ही हुआ था ऐसा ना, जब अर्थ फॉर्म हुआ था तो वो पूरा सॉलिड हो रहा था, mantle भी सॉलिड हो रहा था.
तो तुम्हारा क्रस्ट भी सॉलिड हो रहा था, तो वो जहां थे वहां रह गए हैं, बट दे हैव ए अफिनिटी टू व्हाट, टू मेल्ट फेज। अभी मैं हैदराबाद में हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे तो पसंद है उड़ीसा ना, तो मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं उड़ीसा चला जाऊंगा। वही चीज है, ठीक है। तो उन लोगों को लिक्विड पसंद है लेकिन उनको मिल नहीं रहा था। तो अभी जब थोड़ा सा मेल्ट हो गया है तो ये क्या करेंगे, ये सब निकल आएंगे यहाँ पर ना, मेल्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स चले आए कहाँ पर, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में। अगर ये लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग होता है तब, ठीक है, जब मेल्टिंग डिग्री, जब मेल्टिंग फ्रैक्शन जितना इट विल इंक्रीज, दिस आरई और सॉरी आरई और इनकम्पैटिबल्स, ओके, इनकम्पैटिबल्स विल बी डाइल्यूटेड। अभी यहाँ पर कंसीडर कि 100 था, ठीक है, 100 इनकम्पैटिबल एलिमेंट था। जब इतना मेल्ट हुआ तो यहाँ पर 100 चले आए, ठीक है, 100 नहीं आता है, 50-60 चले आते हैं, कुछ रह जाता है, कुछ आ जाता है, ठीक है। तो कंसिडर कि 100 आ जाता, 100 कंसिडर 1000 है, 100 आ गया, ठीक है, 500 700 आ गया, 700 आ गया। जब ये और ज्यादा मेल्ट करता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेल्ट का फ्रैक्शन इंक्रीज होगा बहुत रैपिडली, बट सेम पेस में ये 700 1000 होगा क्या, धीरे धीरे होगा। तो ये रिलेटिवली डाइल्यूट होते जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। पहले जब 700 एलिमेंट्स थे पर 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर तो गलत हो जाएगा तुम्हारा, 1 मीटर क्यूब मैग्मा में, ठीक है। अब क्या है, 1000 है 5 मीटर क्यूब मैग्मा में। तो अभी क्या हुआ, डेंसिटी धीरे धीरे घट रहा है, डेंसिटी तुम्हारा क्या, वो जो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। सो ये जो अगर थोड़ा सा मेल्ट कर रहा है ना, थोड़ा सा मेल्ट कर रहा है, तो ये एनरिच हो जाएगा। नाउ द थिंग इज, थोड़ा सा मेल्ट कौन करेगा, थोड़ा सा मेल्ट वही करेगा जिसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर कम है, मेल्टिंग टेम्परेचर इज लेस। जैसे कि पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जितना भी एसिडिक कंपोनेंट्स हैं, तो ये दिस मेल्ट में बी, दिस मेल्ट में बी ग्रानिटिक, और यू कैन से एसिडिक, और योर like your what, acidic or andesitic, okay, andesitic, because you know the crystallization sequence, okay, olivine, pyroxene, amphibole, biotite, उसके बाद क्या आता है, moscovite, then your potash feldspar quartz, okay। सो ऐसे क्रिस्टलाइज होता है। तो जब मेल्ट करेगा तो उल्टा करेगा ना, कि क्वार्ज पहले मेल्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है। तो दिस थिंग हैपेंस, ओके, तो मेल्टिंग हो गया। तो अगर लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग होता है, देन यू नो कि लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग होता है तो एक ग्रानिटिक और एक एंडेसिटिक मैग्मा जनरेट होगा, और वहां पे इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स एनरिच होंगे, क्योंकि इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेफर ए लिक्विड स्टेट, ओके। ये एक चीज है। दूसरा चीज देखेंगे कि अभी ये थोड़ा लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग हुआ कि हाई डिग्री ऑफ मेल्टिंग हुआ, ये कॉन्सेप्ट गया। अब हम लोग मेल्ट को जा रहे हैं कि अभी हमारे पास मेल्ट है, नाउ वी हैव मेल्ट, देन मेल्ट इज अपराइजिंग, ओके, ऊपर जा रहा है मेल्ट। इट विल अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड असिमिलेशन, डिफरेंशिएशन एंड असिमिलेशन प्रोसेस, ओके, एंड अदर मिक्सिंग प्रोसेस, mingling process, okay, differentiation, assimilation, mixing process, mingling process. Now these thing will again, what will this thing, this differentiation and assimilation has major role in producing granitic magma. This has not major role, this जब mantle मेल्ट करता है ना तो एक बड़ा सा पार्ट मेल्ट कर जाता है, तो ऑलमोस्ट एक माफिक magma और बेसिक magma जनरेट्स, ओके। सो जब मेजर पार्ट क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन असिमुलेशन में होता है। तो ये मैग्मा जब ऊपर आ रहा है वो क्या, वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज फ्रैक्शनल मेल्टिंग,
gravity settling, filter pressing, flow segregation. These are the differentiation processes. तो ये सब प्रोसेस में क्या होता है, ये सब प्रोसेस में डिफरेंशिएट होता है मैग्मा। क्या डिफरेंस होता है, अलग हो जाता है। कौन सा पार्ट अलग हो जाता है, बेसिक पार्ट अलग हो जाता है। बेसिक पार्ट, टू बी प्रिसाइज, बेसिक पार्ट मैग्मा में रह जाता है और एसिडिक पार्ट निकल जाता है, और मे बी अंडरसिटिक पार्ट निकल जाता है। और मिक्सिंग होगा तो एसिडिक और बेसिक मिक्सिंग हो जाएगा तो अंडरसिटिक हो जाएगा, ये निकल जाता है। नाउ इफ दिस एसिडिक मेल्ट विल separated out from this basic thing, okay, now the thing is incompatible elements. Incompatible elements, they prefer to remain in liquid. So this is liquid phase, already this is liquid phase. ओके अगर डिफरेंशिएशन भी हो रहा है ना, तो ज्यादा कुछ एल आई एल और इसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे विल प्रिफर इन लिक्विड स्टेट। इट शुड बी बेसिक और इट शुड बी एसिडिक, कुछ भी होता है तो लिक्विड स्टेट में रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन में ज्यादा कुछ हम लोग पढ़ते नहीं है, डिफरेंशिएशन असिमुलेशन में, इसमें इनकम्पैटिबल के बारे में कुछ पढ़ते नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं कि लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग, लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग होगा मतलब आर एनरिचमेंट हो जाएगा। नाउ द थिंग इज आर एनरिचमेंट होगा, लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग मतलब ग्रेनिटिक और एसिडिक और अंडरसिटिक मैग्मा जनरेट्स। अगर मैं बोल रहा हूं कि जो मैग्मा, ये जो पोर्शन था ये टोटल मेल्ट हो गया एंड टोटल मेल्ट होके ऊपर आ गया, तो दिस विल शो आर एनरिचमेंट और डिप्लीशन, एनीवन? So what is the nature of magma? नॉर्मल mantle, लोअर mantle, नॉर्मल लोअर mantle। लोअर mantle में ही मैग्मा जनरेट होता है ना, न्यू मैग्मा इज जनरेटेड ओनली इन लोअर mantle। तो ये टोटल, ये एक पोर्शन लिया मैं, लोअर mantle का एक पोर्शन लिया, वो पोर्शन टोटली गेट मेल्टेड एंड इट इज अपराइजिंग, व्हाट इज इट विल बी एनरिच्ड और डिप्लीटेड। It will be enriched na, it will be enriched, because although REs are here only, there is no partial melting, there is no separation, there is no differentiation। ये जो भी चैम्बर में आरी थे वो वहां पर ही हैं, मेल्ट के साथ ही हैं, वो बाहर नहीं गए हैं। तो आरी जो था वो है उसमें मेल्ट में, तो दैट विल बी एनरिच्ड ना, व्हाई दैट विल बी डिप्लीशन? अगर मेल्ट इतना होके निकल जाता है, दिस विल बी डिप्लीटेड एंड द मेल्ट विल बी एनरिच्ड। Sir, कंसिडरिंग लाइक योर पेट्रोजेनेसिस। ओके, पेट्रोजेनेसिस को हम रिलेट करते हैं थोड़ा, तो हमको पता चलेगा कि कैसे क्या होता है। तो यू कंसिडरिंग हम किम्बरलाइट, ओके, सो किम्बरलाइट, so basically kimberlite is a, first what is its definition? Ultra potassic, ultramafic rock, ultramafic rock. So now you have to generate such a magma from the mantle which consists potassic component, mafic component, which you do not find generally, because mafic component is basically enriched in basic magmas and potassic component is enriched in acid magmas, acidic magmas. So you have to generate such a magma that all that should be enriched in potassic and mafic. So what will you do? See, lower mantle has both potassic components, mafic components, everything, because lower mantle is the primitive thing। वो मेल्ट होगा तभी कुछ जनरेट होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, तभी जाकर कुछ तुम्हारा बेसिक मैग्मा, एसिडिक मैग्मा, माफिक मैग्मा, वो सब निकलेगा। सो लोअर मेंटल में सब कुछ है। नाउ वी आर टेलिंग व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मेंटल, एनीवन? Or live in like in context of minerals? No, no, not particularly. Uh, uh, Particularly, there is a mineral name which we now Phosphorite, telling that ringotite, peridotite. It now there is a new concept. Okay,
where we are telling that the whole mantle is prismatic in composition. Okay, prismatic in composition. So prismatic in composition. So you can research more this about this. तो जो भी हो, तो now you have to generate a magma which is enriched in this mafic component and potassic component. तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा? So high degree of partial melting, then this much amount of melt will be generated, or this much amount of melt will be generated. Now in this whole component there is potassium, there is magnesium. तो हाई डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग मतलब ज्यादा पार्शियल मेल्टिंग हो गया, ज्यादा मेल्ट जनरेटेड हो गया, तो ज्यादा मेल्ट जनरेट हुआ मतलब उसमें पोटास कंपोनेंट भी रहेगा, मैग्नीशियम कंपोनेंट और माफिक कंपोनेंट भी रहेगा ना.